Hello students, today class is all about your doubts in the chapter Resultant and Equilibrium Analysis. So let's start. What is equilibrium? What is equilibrium? First discuss that. What is equilibrium? So a body is said to be in equilibrium if the resultant force and the resultant moment acting on a body separately equal to 0. So a body is said to be in equilibrium if the resultant force and resultant moment acting on a body becomes 0. That means all the forces acting along x-axis as well as along y-axis must be 0. So all the forces or component forces acting along x-axis as well as y-axis must be 0. So we can write mathematically as, that is, summation of forces acting along x-axis must be 0. Also summation of all the forces acting along y-axis must be 0. Also the resultant moment acting on the body is 0. So this is the body which is in equilibrium. These conditions should be satisfied. But if a body is not in equilibrium, then what happens? If the body is not in equilibrium, so how can we find out the resultant forces acting on that body? Jodi sei body upare number of forces act karuthanti, so what is the resultant force? Then we should apply this mathematical formula, that is the square root of summation of f of x ra whole square plus summation of f of y ra square. Then as the resultant force is also a vector quantity, so what is its direction? Direction can be found out by the angle of inclination. That means theta, this is equal to tan inverse summation of f of y divided by summation of f of x. So जदि बॉडीटा तुम इक्विलिब्रियम रे नाही ताहले ता ऊपर जदि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करू थाए ताले से जो फोर्सेस गुडा कर रिजल्टेंट फोर्स हम केमिति के बाहर करि परबा ना बाय अप्लाइंग दिस फार्मूलास, दैट इज r इज इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f ऑफ y स्क्वायर द स्क्वायर रूट एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स summation of f of y divided by summation of f of x. Let's discuss the following problem, and the problem is find out the magnitude of resultant and its direction of the given figure. This is a body and number of forces acting on that body. So what is the resultant force of these forces acting on a body? So we can find out this by using these two formula, that means r is equal to summation of f of x square plus summation of f of y square root of, and then we will find out the direction by applying this formula, that is tan inverse summation of f of y divided by summation of f of x. Look at the figure. Here number of forces acting on a body. Here 20 kilonewton force acting on the x-axis and 10 kilonewton force acting on the y-axis, and the three forces, that means 50 kilonewton, 15 kilonewton and 30 kilonewton are acting on the body by making an angle 30 degree, 45 degree and 30 degree. So students तुमको सब बेले मन रखिया पई पड़िबो जे जो फोर्सेस गुडा को x एक्सिस ऊपर एक्ट करूथिबो, माने कर x एक्सिस ऊपर किंबा y एक्सिस ऊपर, तांकर रिजोल्यूशन ला कोनोसी आवश्यकता सेठी नाही. केवल हमें सेही फोर्सेस गुडा को बा सेही फोर्स वेक्टर गुडा को हमें रिजल्व करबा जो माने कि एक्सिस सहित एंगल ले अछंती. दैट मीन्स सेठी को फोर्स एंगल ले अछंती. 50 किलोन्यूटन फोर्स x एक्सिस सहित 30 डिग्री रे अछि, 30 किलोन्यूटन फोर्स x एक्सिस सहित 45 डिग्री रे अछि एंड 15 किलोन्यूटन फोर्स y एक्सिस सहित 30 डिग्री एंगल ले अछि. तो हमको ए तीनोटी फोर्स को केवल सेमान को हमें रिजल्व करि दबा आ तांकर कंपोनेंट्स गुडा को बाहर करिबा. बाकी जो दुईटा फोर्स रहिला, दैट मीन्स 20 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन, ताहार रिजोल्यूशन ला कोनोसी आवश्यकता नाही. सो एट फर्स्ट वी शुड ड्रा द FBD ऑफ दिस डायग्राम. व्हाट इज FBD? फुल बॉडी डायग्राम. दैट मीन्स आमे कोन करिबा ना ए जो फोर्सेस गुडा को जो बॉडी ऊपर एक्ट होची ताकू हमें तार सराउंडिंग थारो आइसोलेट करि दबा. केवल कोन देखेबा ना ता ऊपर केते गुडी नंबर ऑफ फोर्स एक्ट होची. तो सो से FBD ता एमिति का हबो. एट फर्स्ट 20 kilonewton force, this is acting along the x axis. बाकी पिला माने एठी लक्ष्य करा यार डायरेक्शन केमिति का अछि ना towards left. So आमे कोन करबा by applying the principle of transmissibility.
the principle of transmissibility. What is that? Now the force can be transmitted along the same line of action. That means 20 kilonewton force ro line of action eta. So आमे तार line of action ऊपर ताकू गोटे point रो another point को आमे easily set कर परिबा. So ए force को मुइठी सर्कल बुले देछि ताकू आमे transmit करियन बा कोठी ना in this direction along the x axis. Here is the 20 kilonewton force. And another force is 50 kilonewton force, 15 kilonewton force. And this is, and the direction of this force is along, this is the line of action. Here we can draw it. Here is the 20 kilonewton force. This is our final diagram, that is FBD of that diagram. 20 kilonewton force. Here is 10 kilonewton force. This force can be shifted along the line of action. That means 15 kilonewton force acting in this direction 30 degree. So this also can be transmitted along his same line of action. That means here is the 15 kilonewton force, 15 kilonewton force, and this angle is 30 degree. Fine. Next comes to 30 kilonewton force. This is acting with the x-axis at an angle 45 degree. 30 kilonewton force. And next, okay, our figure is complete. So let's start. Resolve this force. That means 50 kilonewton force into its component forces. Resolution हमें एमिति क्या करी परिबा? And this angle is 30 degree. So अच्छा हमको कौन देखिबार अछि थीटा को एक्सिस सहित एसोसिएट हेकि रहिछि एठी थीटा तमरो y एक्सिस सहित एसोसिएट हेकि रहिछि सो y कंपोनेंट ता मस्ट बी इन cosine and x component is must be in sine. So x component of this force 15 kilonewton force is 15 sine 30 degree. Here is the y component, that means 15 cos 30 degree. Then comes to this force. This also can be resolved into two components. Here is the y component and here is the x component. जेहेतु a angle टा 45 degree, so this angle is also 45 degree and the angle associated with the x axis. So this component must be in sine. So sorry, in cos, that means 30 cos 45 degree. And this component, that is the y component of 30 kilonewton force, is 30 sine 45 degree. So here are the forces. So complete. So let's start. Summation of f of x. What is the value of summation of f of x? That means हमको देखिबार अछि जे x axis ऊपरे को फोर्स एक्ट करूची आउ जो फोर्स एक्ट करचंती तांकर x कंपोनेंट गुडा कर वैल्यू केते. एट फर्स्ट देखि देबा हमें एई फोर्स को जे कि x axis ऊपरे एक्ट करची आउ डायरेक्शन कोडे ना टुवर्ड्स लेफ्ट, सो साइन इज नेगेटिव, तो -20 डिग्री. देन कम्स टू दिस फोर्स. अच्छा एई फोर्स रो x कंपोनेंट रो वैल्यू केते ना 15 sin 30 डिग्री, डायरेक्शन कोडे ना टुवर्ड्स राइट, सो दिस इज प्लस 15 sin 30 degree. Next comes to the x component of this force, that is 30 cos 45 degree, but the direction is towards left, so here is minus 13 cos 45 degree. Fine. Next एठी आ गोटे फोर्स छाडी देछि जोटा हमर गिवन फिगर रे थिला, another force which is 15 kilonewton force acting with an angle 30 degree with the x axis. So जेहेतु तमरो 50 kilonewton force मध्य x axis सहित किछि एंगल रे अछि, सो ताको मध्य हमें रिजल्व कर देबा एंड द रिजोल्यूशन इज लाइक दैट. एंड हियर इज द एंगल 30 डिग्री, सो दिस इज द एंगल 30 डिग्री. आउ एठी एंगल ता तमरो केमिति का अछि पिले माने ना x axis सहित अटैच हेकि रहिछि, तो x कंपोनेंट ता तमरो cos रे आसीबो, तो सो दैट 50 cos 30 डिग्री एंड हियर इज द y कंपोनेंट, दैट इज इन sin 50 sin 30 डिग्री. Next comes to this part. Acha. Next, what is the x component of 50 kilonewton force? That is 50 cos 30 degree. What is its direction? Towards right. So positive. So plus 50 cos 30 degree. अच्छा पिला माने तमे मेकानिक्स रे सब जाक प्रॉब्लम कैलकुलेशन बेले साइंटिफिक कैलकुलेटर तुमको तमे अवेलेबल अछि, तमे यूज करि परिबो, सेठी वैल्यू गुडा देखि कि तमे कैलकुलेशन बेले वैल्यू पकई परिबो. What is the value of sin 30? 1/2 minus 30. What is the value of cos 45? 2 root 2/2 and 50 cos 30, that is root 3/2. sin और cosine टेबल पिला माने ठीक भलो भाबरे देखि दबो. अच्छा
So minus 20 plus 7.5 minus 15 root 2 plus 25 root 3. 7.5 and 25. Okay. Next comes to, so एटी कौन करबा ना root 2 और root 3 वैल्यू पिला माने सब्स्टिट्यूट कर देबा 7.5 minus 15 and 414 and 30 the value of root 3 1.732. अच्छा, with the help of calculator we can evaluate this value. Minus 20 minus 15 into 1.414 plus 7.5 plus 15 sorry 25 into 1.732. Minus minus gote side ne asi plus plus gote side achi. So with the help of calculator we can solve it. What is the value of 15 into 1.414? 15 into 1.414 1.414 that is 21.21 plus 7.5 and what is the value of 25 into 1.732 that is 43.3. By evaluating this value our value is 9.59 and what is its units that is kilonewton. So what about force ro unit kon achi pila mane na kilonewton. So ethi jo amaro forces along x axis ro summation bahala tahar mate unit ame kothre rakhiba na that is 9.59 kilonewton. So एटी हमें लिखि दबा this is equal to 9.59 kilonewton. Next evaluate the value of summation of f of I. Find because हमरो resultant factor रो बा resultant force factor रो फार्मूला कोन ना summation of f of x रो स्क्वायर तो summation of f of y रो स्क्वायर रो रूट ओवर. सो हमको प्रथमे एटा बाहर करबार अछि देन एटा बाहर करबार अछि और वैल्यू गुडा को फार्मूला रे यूज करबार अछि. नेक्स्ट हमें बाहर कर दबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y axis. सो प्रथमे देखो एठी 10 किलोन्यूटन फोर्स y axis ऊपर एक्ट करूछि और डायरेक्शन केमिति करना टुवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो द साइन इज पॉजिटिव. सो plus 10. Then comes to the y components of these these four forces which are acting at an angle with the axis. So here is the 50 kilonewton force and what is its y component? Y component is 50 sin 30 degree and in which direction? In upward direction. So sign is positive plus 50 sin 30 degree. Then comes to this force. What is its y component? The y component is 15 cos 30 degree and what is its direction? The direction is in upward direction. So sign is positive plus 15 cos 30 degree. Next comes to this force that is 30 kilonewton force. What is its y component? The y component is 30 sin 45 degree. What is its direction? Its direction is in upward direction. So the value is plus 30 sin 45 degree. Okay. Next evaluate 1 2 3 4 1 2 3 4 fine. 10 plus 50 what is the value of sin 30? 1 by 2 plus 15 cos 30 what is the value of it? Cos 30 that is root 3 by 2 plus 30 sin what is the value of 45 degree sin 45 degree that is root 2 by 2. Okay, let's evaluate 25 plus यहाँ में काट देले पाइबा 7.5 root 3 plus sorry 15 root 3. अच्छा एबे कोन करबा root 3 root 2 वैल्यू पुट कर दियो 10 plus 25 plus 7.5 into 1.732 plus 15 into 1.414. Let's evaluate that and the value become 69.21 kilonewton. तुम्हें मैंने इजीली कैलकुलेटर हेल्प करके साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करि परबो. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस ऑफ y कंपोनेंट्स हमें सेटा बाहर कले 69.29 kilonewton. सो हमको एबे कोन करिवार अछि रिजल्टेंट फोर्स रो फार्मूला रे एई वैल्यू गुडा को पुट करि दबार अछि. So we are able to find out the value of R. So what is the value of f of x? That means 9.59 whole square. What is the value of f of y? 69.21 square root 69.87 kilonewton. अच्छा नेक्स्ट हमको कौन बाहर करिवार अछि हमको प्रॉब्लम में ऑलरेडी देइछि जे रिजल्टेंट फोर्स बाहर करबा आ तार डायरेक्शन को दिगरे से एक्ट होबो. सो डायरेक्शन पई हमरो फार्मूला कोन यूज करि दबा दैट मींस tan इनवर्स division of summation of f of y and summation of f of x. Substitute the values of summation of f of y and summation of f of x in this formula. So the value is like that is 69.21 divided by 9.59. Okay, can be like this 7.216 and it is equal to 82.11 degree. सो हमको जो गिवन फिगर दिया जाइथिला सेठी जो बॉडी ऊपर तुमरो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होची तो सो दैट तांकर जो नेट फोर्स बा बॉडी ऊपर जो फोर्स रो नेट इफेक्ट पड़िबो दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स तार वैल्यू केते पाइले 69.87 किलोन्यूटन और से को दिगरे एक्ट करबो ना एक्सिस सहित 82.11 डिग्री एंगल क्रिएट करके एक्ट करबो. अच्छा पिला माने थैंक यू. आ जदि तुमर किछि डाउट्स थिबो तो व्हाट्सएप रे शेयर करले मु नेक्स्ट वीडियो सही रिलेटेड रखिबी. थैंक यू.